उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है सबके साथ। क्या होता है ना, जीडी जैसे तुम लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जैसे पहला बंदा कुछ बोला, सुनो अब मेरा बात ध्यान सुनना, ठीक? काम का बात करने जा रहे हैं, सब लोग सुन रहे हो? बोलिए। यस सर। तो जीडी में जैसे कल का टॉपिक था, क्या था कि मतलब वो, अच्छा मीडिया वाला टॉपिक उस दिन था, कल शाम का क्या टॉपिक था? कल शाम का टॉपिक था मोबाइल इंटरनेट। हाँ, मोबाइल इंटरनेट का टॉपिक था, या मीडिया का भी जो टॉपिक था। तो सब लड़कों में क्या है, एक ही दिक्कत हो रहा है। जैसे मान लो एक बार कोई मान लो डिफाइन कर दिया मीडिया क्या होता है, तो सब सब लड़के वही काम कर रहे हैं। जब तुम्हारे बोलने का बारी आता है तो उस डिबेट को आगे बढ़ाओ। किसका है वो आवाज, नॉइज आ रहा है? अच्छा ठीक। तो वो क्या है कि मतलब जो है ना, डिबेट को आगे बढ़ाना है हमको, डिस्कशन को जो है ना आगे कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि डिबेट जो है, देखो जैसे मान लो हम अगर इनिशिएट किए तो मेरा पहला चांस बन गया ना उसको, मतलब उसको इंट्रोड्यूस करने का। टॉपिक को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया कोई आदमी, तो तुमको बार बार टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, बार बार जैसे कल ही मतलब जो था वो मोबाइल इंटरनेट का, तो सब आदमी जो है बोल रहा है कि मोबाइल से कुछ फायदा भी है। एक ही बात सब लोग बोलोगे तो कैसे तुम्हारा पॉइंट आएगा? जैसे जो पहली बार बोला उसको हम ना मार्क्स देंगे, बाकी को वही बात का क्यों मार्क्स देंगे? समझ रहे हो बात को? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो अगर वो मान लो, हाँ अगर वो मान लो कि उसका बता दिया मेरिट डिमेरिट, तो तुम उसमें कुछ और लगा के बोलो कि सरकार को ये करना चाहिए, ताकि क्या हो कि मतलब जो है, तो तुम अलग बोलो, ठीक? उसी में उसी को लिंक करते हुए बोलना है, ठीक? इसका मतलब डिस्कशन को आगे बढ़ाना ओके ओके। बाकी कैंडिडेट अपना मैक ऑफ कर ले, जो सुन बस जो सर बोल रहे हैं, बाकी कैंडिडेट मैक ऑफ कर ले कि सर का बात सही से सुना पाएगा। तो इतना बात ध्यान में रखना है, हम लोग को डिस्कशन को प्रोसीड करना है, डिस्कशन को एक ही जगह फंसा के नहीं रखना है, समझा? ओके और सर। ज्यादा समय, हाँ बंदा तो ठीक है। और जो मान लो कि दूसरा तीसरा बंदा जो होगा, वो अगर मान लो नहीं भी, जैसे अब तुम बोलना स्टार्ट कर रहे हो तो सबको गुड मॉर्निंग बोलने का जरूरत नहीं है। अगर तुम इनिशिएट कर रहे हो, तुम इनिशिएटिव ले रहे हो, तब सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी विश करना विश करो, ठीक? अगर तुम इनिशिएट नहीं किए हो, तुम सेकंड पर्सन हो या तीसरे नंबर पे बोल रहे हो या चौथे नंबर पे बोल रहे हो, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने का कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? तो जो है ऑन द काउंट ऑफ 3 स्टार्ट हो जाना, ठीक? सब प्रिपेयर रहा करो और इनिशिएटिव लेने का कोशिश किया करो। देखो 90% केस में जो बच्चा पहले बोलेगा उसका सिलेक्शन लगभग 90% पक्का है, बात मान के चलो। पहला बार अगर बोल दिए, उसके बाद बीच में इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना सर पहले? इंट्रोडक्शन देने का मौका सबको मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो तुम्हारा चांस छूट गया, तुम पहले नहीं बोल पाए, कोई दूसरा लड़का फटाक से बोल दिया, समझ रहे हो? पहले लड़के को मौका मिलता है अच्छा खासा। ओके सर। तो उसके बाद 2 3 4 उसके बाद मौका मिलना बंद हो जाता है, उसके बाद फिश मार्केट बन जाएगा, ठीक? तो ऑन द काउंट ऑफ 3 स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम नीतीश. I did 12th in 2019 with aggregated mark 85% from BSc Board Patna. Now I am pursuing BSc in Physics Honors from Patna Science College. There are 5 members in my family. My father is no more. My mother is homemaker. इंट्रोड्यूस करने बोले थे तुम। सुनो नीतीश, देखो तुमको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, टॉपिक जो था ना, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना। तुम गुड मॉर्निंग बोल करके तुम टॉपिक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, ठीक है? इंट्रोडक्शन सब देगा, तो बोलो। सब देगा। Okay, sir. Good evening, everyone. Today, our GT topic sexual harassment. Sexual harassment is the serious problem in our country. It includes physical and verbal and psychological harassment. In our country, more than second girl in our country must be harassed
by the harasser to our police department should take many steps against sexual harassment. So that's all about this topic, and so that. Next. Now I would like to tell you about the topic which is given to me in my group, sexual harassment. In my opinion, sexual harassment is a serious problem in our society. Workplace, a school, college, railway station, train, etc. Sexual harassment and other types of violence are engaged by before and section 9 related to sexual harassment. Sexual harassment is irrational and undesirable behavior of men in outside home, which every second girl has faced in daily life. The victim of sexual harassment are mostly girls, women. It indicates that it is not safe for girls to move out of their house. As well as know that in India, women are sexually harassed by men. So it is compulsory that they will be because strict. In my opinion, women should give a special power against sexual harassment, and they should join defense force to safety their Next बोलो कोई. Next कोई बोलो. I agree with you, and I like to add some more. People are fear to complain against harassment because they fear that for their losing jobs and the lack of trust in laws. So they cannot complain against harassment, and our police cannot be take any steps against harassment. The harassers are fairly roaming, and they are openly torture the women everywhere. There is no place where women are not treated by harasser. In our society, almost situation, and the almost situation the most victims of harassment in our society is girls. So the girls are not safe in outdoor of their homes because they were harassed by the harasser. Next. We continue. कंटिन्यू रहो बात बोलते जाओ ना कि आई वांट टू ऐड few points in मतलब this I agree with him, और उसके बाद अपना पॉइंट बोलते जाओ, रुको मत. सर ये एक या दो लोग बोल रहे हैं और फिर बोल नहीं रहे हैं, कुछ बंदे इनएक्टिव है. तो तुम बोलते जाओ ना, तुमको जैसे मौका मिल रहा है तो तुम ही बोलो. हाँ चलिए ठीक है सर. I agree with you, and I would like to add some more. We all hear the incident of Hathras. These types of incidents are stigma for our society. And अरे इतने लोग हो यार, पार्टिसिपेट करो. Why you are not participating? I am also participating, but then all 9 members are not participating in this group discussion. ऐसे में मजा नहीं आता है यार, कुछ तो बोलो.
सर ठीक तो चल रहा था, बोल रहे हैं, हम बोल इंट्रो रहे हैं। Sir, am I audible to everyone? यस यस Okay, thank you, sir. So speak your opinion in the. हाँ, इतना टाइम मत लो, देखो इतना टाइम तुमको वहां सर, नहीं मिलेगा। जैसे सर, तुम हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। आऊं करोगे, तीसरा आदमी घुस जाता है बोलने के लिए। सर, जब now रियल I ta- बेइज्जती होगा ना, चलाने सर, नहीं आ हाँ रहा है ना जो। चलो तुम बोलो, So तुम now चलाना I क्या, ta- तुम आवाज आ रहा है, तुम बोलो, वी कंटिन्यू। बोलो ना, now तो I उतना talk डर to कहाँ रहा है, about तुम the बोलते sexual जाओ। harassment. Now I talk to sexual harassment is one of the most worst disease in our country and society. Today we are facing the most critical situation, most critical situation of the society. Not only the girls, but also the all over the his and her family. Girls are very afraid of the men's because the men's behavior is not men's behavior not good for them. So the girls are not moving, not visiting very frankly any liberty. The girls today, we have to see that as well as we have to we have saw we seen the girls today has no liberty to going outside is just like मैंने लड़कियों को ज्यादा आजादी नहीं दिया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक अपना प्रोग्रेस करे, सफलता पर हर चीज में सफल हो सके, जिससे कि Girls are हर not हर क्षेत्र getting में more freedom. I agree with you. तो And उन्हें हर क्षेत्र में काफी कम देखा जा रहा है yeah, but प्रोग्रेस also करते हुए। in They are USA and Despite Eastern being countries यह एक बहुत are tortured. this is the most critical despite situation being the for strict our law, country. why the government is not able to give the confidence among the girls and the families that despite even the in a Hindu culture, women are worshipped as a Durga, Kali and Lakshmi, but in the real case they are being harassed everywhere and every nooks and corner. What is the basic reason behind this? Why the women are not able to move freely? They are not feeling safe in their own house or in their locality. because What is the reason In behind spite of this? our government, in spite of our government has because taken they the are most. tortured by the harassers everywhere. In spite of our government has They taken the can't most go outside from their strongest home. step, most and strongest step to for our girls. Just like we say, the government has taken the most important step because the for girls and girls also participated them for and supported them government. So सपोर्टेड है, जिससे कि मैंने लड़कियां और जैसे लड़कियों और जैसे मैंने गवर्नमेंट है बहुत से कदम उठा रहा है लड़कियों को सुरक्षा के लिए, जैसे के लिए उन्हें बहुत आरक्षण दिया जा रहा है चारों तरफ ताकि वो आगे बढ़ सके। इसलिए सो दिस इज द मोस्ट The government gives it. इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस के लिए ये सब बहुत जरूरी है। नेक्स्ट And the In government section 354 of the penal code states that annual or criminal force of the social harassment and punished by the less the 3 year and may extended up the 7 year may included fine. In section 509 stated that any act, gesture or word intended to insult the moderate. On 23 April 2013, the legislature finally brought into the sexual harassment of the women at workplace Act 2013 to seek to protect the women from sexual harassment at their workplace. This act marks on the important step towards the protection of women. In my opinion, all the sexual harassment law are extremely hard towards women, men to deserve the equal right in the law, but men are not included in any of the law. This means no man can complain about the sexual harassment. Thank you. तो लड़के का पॉइंट वैलिड था कि सेक्सुअल हैरासमेंट सिर्फ लड़की के साथ भी नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन देयर इज नो एनी लॉ व्हिच प्रोटेक्ट्स मेंस अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरासमेंट। Okay, sir. Okay, anybody wants to add some few points in this? या इसको आगे डिबेट को कंटिन्यू रखो, रुको मत। I agree with Yes, you. sir, yes. I agree with you, and I would like to add some more
we all should organize the employees awareness to their rights. So the awareness of people employers rights, they can also complain to the police also there are laws, there are IPC sections, but matlab when it comes to justice, they don't get justice from the matlab system. Why the system behaves like that there is no confidence among the girls or the family of the girls who is getting out of the doorstep to get job, or she is not feel safe even at their workplace. The workplace should be safe. Even the government has told that every workplace have to follow the Visakha guidelines. Many of them don't follow the guidelines of the, or even if they follow the guidelines, when it comes to seek justice, they don't get justice. Why is it so that matlab that is, there is so much of roadblock in the terms of justice, and what should be the solution regarding this? In my conclusion, I agree with you, in my and I would like to add some sexual more. harassment is a serious Our problem, and government has protection law taken mark an many important steps step in the progress against the toward the sexual protection of women harassment, at work, but it is the duty of the every person at that workplace. Me Too program, the women are on shelf to protect from the harassers. This is the best step by taken our government. चलो रोशन, you continue. I also want to speak something, sir. बोलिए. I want to say that senior inspectors or whoever is, they should care that the law is implied really or not. Because when any girl goes to the police station and they want to lodge a FIR, they are not getting. So it should be seen that they are getting it properly or not. Right, sir? Yeah, right. Okay. Roshan, Good. The biggest problem in our society nowadays. So why police don't want to take matlab wants to write FIR? Yes, Even if sir, because they are getting their Those- salary, and that if they don't work properly, they will still get the salaries. So why will they work for it? Themselves. that is not the reason ki why will there is also matlab jo tha, it is moral responsibility, or matlab there are officers. It is, sir, but we but It is moral responsibility. yes, sir, but wearing a helmet is our moral responsibility. But do we wear a helmet every time when we ride? No, sir. So that's why they are Yes, getting sir. their salaries. So why will That's they not work valid hard? because it is not connected to sexual harassment. It is the traffic police rules, so it does not include in I was sexual just harassment. saying. Okay. Yeah, right, sir. I was just saying that why will they do their work if they are getting the salaries? Then why will they work? But seniors should care Sexual it that harassment is is a it society That problem, means not a police if problem. It is a group Yes, sir. discussions. Now the Okay, sir. point we don't take beat very around carefully. the bush. You I have was to just stick saying on that the topic. Okay. yes, You are I was going saying that wrong. seniors And should if you, care if it you, that is it Yeah, man. applied rightly or not? Right, sir? But in different time, every I think there is a problem in our patriarchal society that Right, thinks sir. that girls are underprivileged, मतलब जो था उनको उस तरह से दर्जा नहीं मिलता है सोसाइटी में. Yeah, they are if not she treated is like that. complaining, Right, sir? and so Yes. they don't want. And ऐसा भी नहीं है कि So, there are many fake cases also. There are many fake cases also. Yes, sir. There are many. That's why.
Yes, sir. I'm saying And that this that's also why derail the we justice should make a law. for the real. Hello. Yes. So the government should make a law for the men also, that no any girl can make a fake FIR against a boy. Right, sir? There should be Yes, sir. punishment on the if it is If find out that any girl, the yes, sir. comes in the finding Can I speak that something? the charges were false. Okay, carry on. Can I I speak agree something? with you, but I would like Yes, to yes. add some more. Many cases are not fake against a man because many women are treated by harassers. So we What would be can't the say that solution? What would be the That's solution? why I What was would be saying the that. possible solution? Sir, That's sir, why I sir, was saying that the laws should be applied sir, राहुल सर, carefully. सर राहुल सर, थोड़ा ये बताने की कोशिश कीजिए ना कि जो ग्रुप डिस्कशन जो वहाँ पर देगा एयरफोर्स में, वहाँ पर टाइटल मैंने अपना पेज पर लिख के देगा कि इसको ही बोलना है. नहीं टाइटल वो दिया हाँ लिख करके देगा. उसका टाइटल टॉपिक का सर? टाइटल नहीं टाइटल भी देगा थोड़ा. उसके बारे में देगा लेकिन टाइटल नहीं देगा उसके विषय में. नहीं देगा. वो पता चलेगा कि टाइटल होना चाहिए, वो खुद पता चल जाएगा वो. और Yes, पता sir. चल जाएगा तुमको थोड़ा सा पैराग्राफ दे देगा कि तुम पढ़ करके टॉपिक understand मिल कर जाएगा सको कि हाँ, बस. टॉपिक यही है. तो उस पर अपना डिबेट देना है. जी. हाँ अपना डिस्कशन करना. डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब डिस्कशन का मतलब डिस्कशन आगे बढ़े. ठीक, डिस्कशन आगे बढ़ने का मतलब है कि हम पहले टॉपिक डिस्कस किए, फिर उसका प्रॉब्लम डिस्कस किए, फिर उसके सॉल्यूशन तक बात जानना चाहिए. ठीक, तभी प्रॉपर डिस्कशन हो गया. तो जैसे अभी प्रॉब्लम हुआ तो आप सॉल्यूशन के बारे में बात करो सर. In Yes, my sir. conclusion, sexual harassment is a serious problem, and protection law marks an important step in the progress towards the protection of women at birth. But it is the duty of every person at the workplace as well as judicial system to ensure that the women's right to equality in the workplace, a school, college, bus stand, etc. Thank you for all of you. रोशन साउंड तो मैं अपना कंक्लूड करो. Sound is not. नॉट क्लियर. माइक सही करो, हेडफोन से कनेक्ट करो, माइक सही से नहीं आ. माइक ऑफ है सर उनका. देखो माइक. Hello. हाँ बोलो, अब सही है. To make the society free from these abuses, the judicial system, government system should make a constitution related to this. Already we have constitution, but the system, that is police system, does not apply these things in well manner. So first of all, police system should make it responsibility on its shoulder to make the society free from these type of social abuses. These are very wrong and painful. When we have listened some this type of activities which are being done in our surroundings, it is totally unacceptable and unbearable. But besides that, our politicians, so-called politicians, does not take part in this, and if they want justice should come on the road, but they are not they do not want to do such type of justice, because Sexual harassment in a most of the legal context, sexual harassment is illegal. Law surrounding sexual harassment generally do not prohibit simple testing, offended the comments or the minor isolated incident that is the due to the fact that do not impose the generally civility code. In the workplace, harassment may be considered illegal when it is the frankly or the safe or thereby creating the
hostile and offensive work environment, or when it's result in the adverse employment decision. Sir, thank you. The government should also make the people aware of the related education. It should curb it from the society, either to get people aware of these type of things, another wise फिर पुलिस के द्वारा किया Hello. जाता है. Sir, sexual harassment. सेकंड बोलो, एक सेकंड. अक्षय को बोलो. अक्षय. Yes, sir. I'm ready. Yeah. You continue. Yes, sir. Today our GD topic is sexual harassment. Sexual harassment is a serious problem in etc. These are often included on unusual comments, including sexual tones, sexual harassment, and other violence increasing day by day in public places. Section 354 and Section 509 is related to sexual harassment. Is undesirable behavior which is faced by every second woman in outside home. In India, the victims of sexual harassment are mostly girls and women. It is illegal if a girl faced it, then she need not to afraid, but try to fight against it. In my opinion, the girl should be empowered to face it. That's all. Thanks. Sir, in my opinion, the sexual harassment and assaulted may be prevented by the secondary school, college, and workplace education programs. Sir, at least one of the programs fertility men produce the sustained behavior change. सर हम सेक्सुअल हरासमेंट को जड़ से खत्म करने के लिए पहले तो कॉलेज स्कूल सेकेंडरी स्कूल से वहाँ से पहले इसकी जो गलतियां हैं यानी जो गलतियां मैंने लड़कों को मैंने समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाया जाएगा उसके बाद इससे हो सकता है उन्हें दूर करने के लिए. एग्री विथ यू. थैंक यू सर. Continue. बोलो. I agree with you, and I would like to add some more. Our GD topic is very sensitive because this is the stigma for our society and our country. Not only in India, but also in development countries, the sexual harassment be done by doing the harassers, and government do not take any step against the harassment. Against the harassers because that's why the harassers are freely roaming. That's why the women are not safe in our country and in our society. So we all should to improve the condition of women by taking many steps against the sexual harassment. So all about this topic. Anil, are you connect? चल रोशन तुम पे तुम बोलो लास्ट इंट करते हैं इस सेशन को. सर अब दूसरा टॉपिक उठाया जाए. दूसरा टॉपिक उठाएंगे ये शाम का रहेगा. शाम में डिस्कस होगा फिर. ओके सर. ओके ये रुक जाए मिनट रुक जाओ. ये क्या बोलते हैं अनिल. जी सर. अनिल तुमने कुछ नहीं बोला. कुछ बोलो. So here is my performance. Anil. Anil. Yes sir.
सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो जीडी का Okay, टॉपिक sir. होगा हम अभी देख लेंगे और उस टेलीग्राम पे मैसेज कर So देंगे। tell me my सर हेलो हेलो हाँ Yes, sir. so tell सर me आप बोले थे कुछ डिस्कस करने के लिए, आप बोले थे कि कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का डिस्कस करने के लिए बच गया, उससे हम कनेक्ट करके डिस्कस करा देंगे। उसका डिस्कस करेंगे। अभी हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, देन उसका डिस्कस करेंगे। बाकी लोग यूट्यूब से, ये जूम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लाइव आएंगे यूट्यूब से। अभी कुछ टाइम में हम लाइव आएंगे यूट्यूब से, तब उसका डिस्कस करेंगे Okay, क्वेश्चन का। Okay, sir. ओके सर, थैंक यू। sir hello sir Bye bye. जीडी का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इसमें मैसेज Hello. टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि शाम में जीडी का टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है। हम लोग उतना Okay. प्रैक्टिस कर लेंगे जीडी का, जो भी ट्रेंडिंग में है yes sir फिर जीडी में कोई sir दिक्कत। sir sir Okay, bye bye. ठीक है, वीडियो का ये सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में मैसेज कर लेंगे।